Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on PIB monthly compilation, and I'll be discussing the entire news that was reported in the PIB for the month of September. PIB is an important platform if you're preparing for civil services examination. It contributes both at the prelims level as well as at the mains level. So reading news that is reported in PIB is something that is very important. Now, what we are doing, I'll be making you understand some of the important news that was there for the month of September. The news has been segregated paper wise, that is General Studies paper 2, 3, and the news that is relevant with the terms of bilateral relationship, the military exercises, and the news that is brief in nature. Everything we'll discuss for the news that was reported for the month of September. So, without any further ado, let's get started. So we'll start this session with the first news that was reported, and that can be categorized under General Studies paper 2. So the first is about the Post Office Bill 2023, something again important. From here you can expect a direct question in the prelims examination although. और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अभी रिसेंटली कैम्ब्रिज लेआउट पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बनाई गई थी, जो कि 3D प्रिंटिंग से एक इम्पॉर्टेंट इंडिया में पहली पोस्ट ऑफिस ऑपरेशन है. Now coming to the Post Office Bill 2023, actually ये introduce की गई राज्यसभा में. This was introduced in Rajya Sabha, and this called for amending some of the rules that was there in the Indian Post Office Act, or you can say this was at 1898. This was a colonial law that was existing in India. Now the bill aimed to modernize and update the legal framework which is there for the post office, and it will ensure that एक landscape बनाई जाए Indian Post Office Services की, augmenting the entire part of services and even the part of amenities that should be there. The laws, the rules and regulation that is there need to be further improved. Now, what are the key changes that has been brought in? कुछ section wise changes लाए गए हैं. First is exclusive privilege of the central government. यहाँ पे जो central government है, government of India will have the exclusive power. How and why? Because the act provides that the central government will establish the post and it will have the exclusive power with regards to the post. The अगर आप बात करें provincial government के time में भी, या फिर जब India was not independent, the office of the post office was actually important post, right? और उसको ही वहाँ के जो government थे, British government, they actually handle it their own, right? The act provides for the issuance of the post stamps as per the rule prescribed by the central government. And the bill also states that the post office will have exclusive privileges issuing the postage stamps, which is actually done occasionally. Occasionally government इसे release करती है on certain occasion. Now service to prescribe, this will be again at the act that will provide the central government the power. This include the letter, postcard, parcel and the money orders. The bill also provide that the post office will have service prescribed to the central government. Now एक और changes की गई है when with regards to the intercept of the shipment. Now if any shipment which is found suspicious, the post office official will have a power to check that and that will be counted in the interest of national security. अगर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे national security के साथ अगर छेड़छाड़ होती है, उस चीज की पावर होगी उसको चेक करने की, and this is something that will again come with the part of suspicion and the duty evasions can be. So ये कुछ important power proposed किए गए हैं under the new changes. Moving ahead with the other topic, that is the National Judicial Data Grid Portal. Supreme Court has actually been on board with the part of the National Judicial Data Grid, or Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, has categorically come up and said that this is a landmark area, the landmark moment for the judiciary. Now, Chief Justice of India has recently announced that the Supreme Court is now on board to the National Judicial Data Grid. एक बहुत ही important portals है जहाँ पे Supreme Court के काफ़ी judgments जो हैं that will be there. The case studies will be there which will be helping the students and the fraternity coming from judiciary. The National Judicial Grid is an initiative that aims to provide transparent and efficient access to information about the country judicial system, right? तो इस तरह के सवाल आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, एंड इवन इन जनरल स्टडीज पेपर 4 जहाँ पे केस स्टडीज में भी आप कोड कर पाएंगे. द लॉन्च वाज देयर एट द सुप्रीम कोर्ट इन 2012. ये एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई थी 2012 में,
और फुल्ली फंक्शनल होने में से टाइम लगे. बाय 2023 it is fully functional. All the hierarchy of judiciary, be it is lower court, the high court, and even the supreme court, everyone has onboarded to the national judicial database, and it's a repository of data related to the case instituted, pending, deposited case, जितनी भी related चीजें हैं that has been made in a e-platform. Now, क्या key features होंगे? First, it will call for transparency. Definitely, that is there. If anything is there on board with the digital platform, it will call for more transparency. It call to have efficiency in terms of providing legal system, promoting the uniform case management practices. No priority will be given to any individual. Either the portal call for efficiency in terms of regulating and making transparency. रियल टाइम अपडेट्स की जाएगी किसी भी केसेस को, जो कि केस स्टेटस के अकॉर्डिंगली अपडेट होंगी. Accountability will be there in terms of judiciary to reduce the potential form of corruptions, and accessibility of lawyers, litigants, judges, and access to case related information easily. मैंने आपको कहा जितने भी judgments हैं that will be easily provided to the advocates. Now, जो portal है that will be again under the project called e-code project. I think most of you must be aware of this. इसमें 18,735 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी इंटीग्रेट की गई है. द डेटाबेस इज कंटिन्यूसली अपडेटेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, और ये जुडिशरी के जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें काफ़ी हद तक मदद करेगी. एंड इट विल प्रोवाइड द जनरल पब्लिक ऑल्सो टू गेट द participants. They will also be an active participant to download the judgments, case studies, and further relevant information required in terms of judiciary cases. Now, PM Vishwakarma scheme, something important, where government is looking forward to augment and help the Vishwakarmas or the skilled laborers. Now, Prime Minister has recently launched the PM Vishwakarma scheme for the benefit of traditional artisans. खास करके कुछ स्पेसिफिक रीजन्स है और जो ट्राइबल रीजन है उनके वहाँ के जो खास करके आर्टिशंस हैं उनके लिए मदद करने की कोशिश की गई. The Ministry of Small and Medium Enterprises is the nodal ministry for the PM Vishwakarma. This is an important point to be noted. प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. Now, features क्या है इस स्कीम के? This scheme will provide 3 lakh loan to any bank guarantee. 3 lakh rupees loan दी जाएगी, but this will be not at the first instances that will be provided. पहले 1 lakh rupees provide की जाएंगी if they have made the repayment and their credit history is good. 2 lakh rupees बाद में उन्हें फिर से repayment मिल सकती है as a loan. So total 3 lakh rupees loan can be provided under the scheme. The prospective beneficiaries will have a common services center और biometrics के portals के through सारी चीजें record की जाएगी. The focus of the scheme is on improving the way artisans को एक loan दी जाए. They should be provided with the loan. They should come up with increasing their livelihood options और वो अपने जो business है उसकी scalability को भी बढ़ा सके. Now, beneficiaries की अगर बात करें, the scheme will provide support to artisans and craftsmen both in rural as well as in urban area. Rural के साथ साथ urban areas में भी इसकी coverage होंगी. The beneficiaries of the scheme will cover the recognition under the PM certificate, उनकी IDs, skill upgradations और basic advanced training. Skill India program की अगर बात करें, Skill India program which is already there, तो कुछ उसके साथ भी collaborations की जाएंगी. The beneficiaries of the PM Vishwakarma scheme will get a toolkit incentive of 15,000 rupees, collateral free support होगी. पहले 1 लाख रुपीस अगर उसने बाद में पे किया तो सेकेंड ट्रांचेस में 2 लाख रुपीस भी दी जाएगी, और जो इंटरेस्ट है दैट इज नॉमिनल एट 5%. एक नॉमिनल अमाउंट रखी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट की. Moving ahead, Skill India digital platform, something very important, where government endeavored to skill the youth of the country. Now, this scheme के through Ministry of Skill Development, that is MSD, has launched the Skill India missions. इस एक digital platform बनाई गई है for skill, education, employment and entrepreneurial landscape in the country. इसके थ्रू जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाई है वहाँ पे स्किलिंग की जाएगी, एजुकेशन, जॉब मार्केट, इंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट को और ज़्यादा एम्बिट उसकी जो है वो बढ़ाई जाएगी, उसके दायरे को और बढ़ाया जाएगा. इट सर्व एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियलशिप. जो प्राइमरी मोशन या फिर प्राइमरी मिशंस बात करें, प्राइमरी एम बात करें, इज टू प्रोवाइड relevant skill training, employment opportunities and entrepreneurial support to empower the Indians. Now, क्या features हैं इस particular schemes के and how it will help? First, it will call for digital technology and industrial skill. आजकल की जो ज़रूरतें हैं, when the skill for 21st century will be actually imparted. Digital verified credentials रखी जाएंगी so that they have a tampered proof presentation for skill.
enhancing the credibility and the employees of the institution. Digital CVs will be there so that if required, अगर किसी के इंडिविजुअल के स्किल है तो जॉब एप्लीकेशंस के लिए उनकी CVs को वापस से गवर्नमेंट एक्सेस कर पाएगी एंड कैन ट्रांसफर टू द डिजायर्ड इंडस्ट्री. Integrations of government program, SID will have a central and state government training program offering diverse scale initiative in a uniform platform. A user-friendly interface बनाई गई है for easy navigation, adaptability and ensuring the positive experiences. Now, क्या benefits हैं इसके? First, it's Aadhaar and AI-based facial authentication that will be there. This to ensure that no tampering is done. Then digital verified credential is there. Artificial intelligence, machine learning के recommendations होंगी. Aadhaar based eKYC की जाएगी. Digital learning is something that is again important. That is an important part. Citizen centering approach होगी. Mobile first approach, scale and scalability, security measures, interoperability, WhatsApp chatbot to ensure जिन लोगों को चैटबॉट के थ्रू अगर असिस्टेंस चाहिए they can also be provided with that, and ease of doing business, right? Ease of doing business will be promoted to a larger extent. Now, some news that is relevant for General Studies Paper 3. First is Aditya L1, India's first solar observatory mission. इंडिया ने अपनी पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च की है यूजिंग द PSLV. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड कि किस प्लेटफॉर्म की यूज़ की गई थी, तो PSLV यूज़ की गई थी, राइट. इट्स अ फर्स्ट थिंग दैट इंडिया इज डूइंग और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट्स आने की कोशिश की जा रही है. जो L1 के मिशंस हैं दैट विल हैव द लॉन्गेस्ट मिशंस इन्वॉल्व विद द इसरो वर्क हाउस लॉन्च व्हीकल एंड इट एम्स टू हैव अ लैंग्वेज 1 पॉइंट जिसे कहते हैं बिटवीन द अर्थ एंड द सन, राइट. So this is how the Lagrange point will be created, and it will travel roughly 1% of 150 kilometer distance between the two, right? So this is how the things will process and it will gather a lot of important informations. Aim क्या है इस particular missions की? First is to get an idea about the colonial heating, colonial mass ejections, pre-flare and flarer activities and their characteristics, dynamics of the space weather and propagations of the particles and the field, etc. So these things will be taken into consideration और ये significant होगी in particular missions के through जहाँ पे इसरो के पास और relevant data इकट्ठे किए जाएंगे. Now, Global Biofuel Alliance, I think most of you must be aware of this fact, and I have already made a discussion about this. G20 में एक important Global Biofuel Alliance बनाई गई है. So Prime Minister has launched the Global Biofuel Alliance. This was established at the G20. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एफर्ट्स है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी जिसमें US, ब्राज़ील, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है. 19 कंट्री वर एक्चुअली देयर. 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टिसिपेटेड इन द बैकिंग ऑफ GBA, दैट इज द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस. ये अलायंस इन्हांस करेंगे बायोफ्यूल ट्रेडिंग को, प्रमोटिंग मोर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूचर्स. क्या एम होगी GBA की? फर्स्ट, इट विल कॉल फॉर द कैटलिस्टिक प्लेटफॉर्म फोस्टिंग द ग्लोबल कॉपरेशंस and advancement and widespread of the fuels. It will provide wider degree of national energy security, environment friendly and sustainable manner. GBA की अगर बात करें, it will provide the deployment of sustainable biofuel capacity building that will call for value chain investment, right? Value chain investment will be there. Support for the national program and promoting the policy measures. See, the target which is there by the government of India, पंचामृत की अगर बात करें, उसके थ्रू टारगेट्स रखे गए हैं. उस सब इंपॉर्टेंट टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह की ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस विद इंटीग्रेशंस, द कोड, द पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल एंड रेगुलेशन एंड इंसेंटिवाइजिंग द बायोफ्यूल अडैप्टेशन ट्रेड. तो अगर कोई स्टार्टअप्स भी इसमें काम करेंगे तो उनको भी इसमें अप्रिशिएट किया जाएगा. Now, some news that is brief in nature and you must know these are the facts that will be relevant for many other government examinations that you'll be appearing for. So first is Santi Niketan. It has been declared at UNESCO World Heritage Site. 41th UNESCO site है ये और काफ़ी important है. ये वो establish की गई थी Nobel laureate रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा in the बीरभूम district, right? And he was a renowned cultural educationist. And West Bengal में अगर बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क, दार्जिलिंग माउंटेन के बाद ये थर्ड ऐसी साइट है जो कि रिकॉग्नाइज की गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में. यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, दिस इज देयर इन दिल्ली इन द्वारका रीजन. ये एक एक्सपो सेंटर बनाई है गवर्नमेंट ने. स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हैं और अभी G20 के जो खास करके P20 की मीटिंग हुई थी, पार्लियामेंट 20 की मीटिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ G20, वो भी यहीं पे हुई है. उसके साथ साथ पार्लियामेंट में हुई है.
It's a world-class infrastructure built with the convention, meeting and exhibition. This is based in Delhi in the area Dwarka. नाउ अफ्रीकन यूनियन ने फुल टाइम मेंबर G20 का ज्वाइन किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कौन से कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया। सो अफ्रीकन यूनियन और इंडिया ने G20 के टाइम में इसे अलग किया। तो नाउ द G20 हैज बिकम G21, राइट। नाउ 55 कंट्रीज के सेशंस के बाद दिस वाज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात की गई है। इंडिया हैज बीन मूविंग 81 पोजीशंस फ्रॉम 48 पोजीशंस इन 2023। जीआई एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो कि इनोवेशंस, सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंजेस को रिकॉग्नाइज करती है एंड इट सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू रिफ्लेक्ट द करंट इनोवेशंस एंड द स्टेटस. Now moving ahead with the other important segment, that is bilateral agreement and summit. So 12th economic and financial dialogue के बारे में बात करेंगे. Now those who are having PSIR optional, जिन बच्चों की optional PSIR है उनके लिए काफ़ी relevant है. So ministerial Indian UK summit with the financial dialogue was held in Delhi. India and UK have reiterated their commitment. We have seen that the downturn is there between India and UK relations, but the both countries looking forward to have a good financial services, building each other's strength and supporting the financial inclusion with sustainable development. तो क्या फोकस एरिया रहे हैं? फोकस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को प्रायोरिटाइज की गई है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिनटेक पार्टनरशिप एंड इवन सस्टेनेबल फाइनेंस. एंड इवन यूके की गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ के जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके पेनिट्रेशन में इंडियन मार्केट में उन्हें अलाउ करनी चाहिए. बोथ साइड हैव डेलिब्रेटेड द कॉपरेशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड मल्टीलैटरल इशूज. द कंट्री विद इंडिया एंड यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज has called for leveraging the expertise and investment support for the India's national infrastructure pipeline. So India infrastructure pipeline एक बहुत ही important segment है जहाँ पे UK की एक important contributions देखी जा सकती है. Now India Middle East European Corridor, this is IMEC. I have already made a discussion to this. ये काफ़ी important और significant project है जो कि G20 के summit में ही की गई. This hold a significant geopolitical economic implications. Signatories की अगर बात करें इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, UAE, EU, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर इसे एक्चुअली कंसेप्चुलाइज किया और फाइनलाइज किया. Now boosting connectivity, this IMEC, that is India Middle East European Corridor, will create a connectivity जहाँ पे गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के साथ यूरोपियन यूनियन और चाइना की जो वर्ल्ड वन बेल्ट रोड है उसको काउंटर करने में मदद मिलेगी विद दिस, राइट. That comprises of Eastern Corridor connectivity, the Gulf and the North Corridor collecting the part of Gulf region in Europe. It will include rail, the ship transport and the part of road transport. तो ये दोनों चीजें इसमें include की गई है. Ship to rail transit and road transport route will be there. So this will be counter to the BRI. This is China's BRI project that will help China specifically. India को कोई ज़्यादा help नहीं होनी है, इस वजह से हमने IMEC के एक नए project को actually में sign किया. Now moving ahead with the last segment, that is military exercise and initiatives. So first is exercise Yudh Abhyas. 19 editions of Yudh Abhyas की गई थी. This was conducted on 25th of September and till 8th of October it was there in Alaska, USA. Exercise conduct की जाती है by Indian Army and United States Army. These type of news is relevant for CAPF aspirant. जिन बच्चों को CAPF का एग्जाम देना है उनके लिए ये काफ़ी relevant है. The exercise is involving the exchange of views with the best practices, drill, combat engineering, obstacle clearances and improving the explosive device warfare. उसके साथ सेकेंड एडिशन ऑफ स्वावलंबन 2023 ये की गई है इंडियन नेवी के बीच में. इंडियन नेवी स्वावलंबन थी. द मिडन एडिशन वाज स्टार्टेड विद द चैलेंज ऑफ द पार्ट ऑफ स्प्रिटनिट इनिशिएटिव. स्प्रिटनिट है क्या? दिस एम्स टू गिव बूस्ट टू द यूजेस ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू द इंडियन नेवी एंड नेवी इज कमिटेड टू डेवलप 75 टेक्नोलॉजी at Azadi Ka Amrit Mahotsav. Something very important which will call for augmenting the part of overall Indian Navy capabilities. Now the other is Varuna. This is 21st editions of the bilateral Navy exercise between India and France. Country का जो name है वो आपको याद रखना है, between India and France, right? This was conducted in Arabian Sea. Sometimes the venue become important. The participants include the missile frigates, tanker, marine patrol aircraft, integral helicopter from both sides. And the last is Simbex 23. This is an annual bilateral naval exercise between India and Singapore. So these two countries have been conducting this since 1994. और इसमें दो phases थे. इस particular initiative की दो phase थी. पहली phase जो थी, this was
harbor phase. It involves professional interaction, cross-deck visits, subject matter expert exchange and sports fiction. और जो सेकेंड फेज थी वो सी फेज की थी, दैट फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस नेवल ऑपरेशंस. इट इंक्लूड डिफेंस एक्सरसाइजेस, गुंडरी फायरिंग, tactical maneuvers, anti-submarine exercise, and various other maritime operations. So this is how it actually operated, and it has helped a lot to both of the countries. India और सिंगापुर ने इसकी collaborations जो है वो 1994 से की हुई है. So this was all about for the PIB for the month of September. We'll meet in the next month analysis. All the relevant news that will be there for the month of October will be discussed in details. The PIB session is very important and I suggest you कि आप PIB के साथ साथ जो हमारी PRS की वीडियो है, PRS की जो वीडियो है वो ज़रूर कोलैबोरेट करके देखें. वहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो भी कवर हो जाएंगी एंड इट विल बी अ होलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. So this was all about for the PIB monthly compilation for the September. If you have any other queries about admission, test series and program, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.